4, 3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज आरएनए के प्राइम टाइम में हम जिस शख्स को अपने साथ स्क्रीन में लेकर आने चाहते हैं, उनसे बेसिकली जम्मू कश्मीर में जब हम श्रीनगर सिटी की बात करते हैं, तो सिटी के हवाले से डेवलपमेंट का जो भी दारोमदार है, इन्हीं के इशारे पे चलता है। डेवलपमेंट में चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, काफ़ी हद तक इनके इशारे पे ही बात बनती है या बिगड़ती है। ज़्यादातर जब हम इनके टेन्योर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी चेंजेस आई हैं। श्रीनगर काफ़ी अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है। इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि इनका जो ये सफ़र है जब से इनने ये चार्ज लिया है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आजकल यूनियन टेरिटरी है। इनको कहा इनका टाइटल है बिकॉज़ ही इज़ द मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जुनैद अज़ीम मटू। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। जुनैद साहब, आपने हमें वक़्त दिया, उसके लिए सबसे पहले शुक्रगुज़ार हैं हम आपके। आप ही से पूछना चाहूँगी, जब से आपने ये चार्ज लिया, मेयर हैं आप, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट है कि डेवलपमेंट, हमारे शहर को और खूबसूरत करना और ऑर्गेनाइज़ करना और बाहर की दुनिया से और ज़्यादा वाकिफ़ करना, ये आपका चार्ज, आपका डिपार्टमेंट है। तो डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं पूछूँ, श्रीनगर में जब से आपने टेक ओवर किया है, क्या-क्या हुआ? क्या-क्या चेंजेज़ आई? अ, मेरा पहला टेन्योर जो था 2018-19 में शुरू हुआ। दिस इज़ माय सेकंड टर्म इन द मेयर्स ऑफिस। मैंने जब इनहेरिट किया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस ऑफ द मेयर को, तो 10 साल बाद कॉर्पोरेशन तकमील में आई थी। 10 साल बाद बनी थी। 10 साल तक एक स्टेलमेट रहा। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होते हैं एक इलेक्टेड अर्बन लोकल बॉडी के, वो कोलैप्स हो गए थे, रिडंडेंट बन गए थे। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इससे पहले 10 साल एक डिपार्टमेंट बन के रह गया था, एक सरकार का महकमा बन के रह गया था। और पहले से मेरी ये कोशिश रही कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लोकल गवर्नमेंट ऑफ श्रीनगर सिटी। जो सही मायनों में, जो आईनी मायनों में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर श्रीनगर की एक हुकूमत है, जो एक हमारा डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है डेमोक्रेटिक सेटअप का। तो हमने पहले दिन से ही अपनी कैपेसिटीज को इंक्रीज करना शुरू किया, अपने होराइजन्स को वाइडन करना शुरू किया। मेरी ये कोशिश रही कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक डिपार्टमेंट के स्फेयर ऑफ एक्टिविटी से बढ़कर एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट बने। और उसमें वक्तन फवक्तन बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन वी वर आल्सो वेरी लकी कि 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आयद हुई जम्मू कश्मीर में, तो 74th अमेंडमेंट का जो मेन पिवट है वो ये है कि अर्बन लोकल बॉडीज एम्पावर हों और सही मायनों में लोकल गवर्नमेंट्स बने। लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आए कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेसिफिक एरियाज थे, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिविल वर्क्स, पब्लिक वर्क्स इन श्रीनगर और सीवरेज एंड ड्रेनेज। ये हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता था। और रजिस्ट्री ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड रेवेन्यू ऑपरेशंस श्रीनगर सिटी। उसके बाद हमारे पास RNB आया, रोड्स एंड बिल्डिंग्स आई, प्राइमरी एजुकेशन आया, हेल्थ के कोई कोहॉर्ट्स आए और अर्बन फॉरेस्ट्री आई। बाकी डिपार्टमेंट्स भी अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अदर डिपार्टमेंट्स इनटू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट बनी। चैलेंजेस उसके साथ बहुत आए। हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, एक पेरिनियल यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि ये जो सिस्टम बना है अर्बन लोकल बॉडीज का, 3 F होते हैं उसमें, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनैलिटीज। तो पहले क्या होना चाहिए कि पहले फंड्स ट्रांसफर होने चाहिए एक अर्बन लोकल बॉडी को, फिर फंक्शंस ट्रांसफर होने चाहिए, फंक्शनैलिटीज, फंक्शनरीज ट्रांसफर होने चाहिए। यहाँ पे निज़ाम उल्टा है। पहले
आपके फंक्शनैलिटीज़ आते हैं, फिर फंक्शंस आते हैं और फंड्स एंड में आते हैं. This is a challenge we faced in the Roads and Buildings Department and other departments, including the Primary Education Department, and we are still facing these problems. But I am very happy to state that despite all of these challenges, हमने ये अचीव किया कि सैनिटेशन के लिहाज में आपको बोलूँ कि when I took over श्रीनगर सिटी रैंक होती थी 450, 452, 457 हमारे मुल्क में in the ranking of sanitation. बहुत मेहनत करके अपने सैनिटेशनल सिस्टम्स रीओरिएंट करके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को रीओरिएंट करके मुझे बहुत फ़ख्र है इस चीज़ पे कि हम उस मुकाम पे पहुंचे that Srinagar was rated as one of the top 20 cleanest cities in the country. That's an and rated achievement. by the central government, by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Amrut is a central scheme where civil works are taken care of, transformational projects are taken care of. यहाँ पे ज़्यादातर अमरूद का जो एम्फेसिस है वो ड्रेनेज और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पे रहा. We are arguably the best city in the country when it comes to the utilization and enforcement of Amrut scheme, the central scheme. Similarly, we are in the process of transforming our primary schools into model schools in the city of Srinagar. हमने 2 MOU साइन किए हैं. एक प्रजा फाउंडेशन के साथ किया है to empower elected representatives और एक हमने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ किया है to upgrade our primary education sector. और मेरा ख्वाब हमेशा से ये था that we want to involve the Azim Premji Foundation in revamping our educational sector. And that is what we did succeed in. JTFRP के बहुत projects किए. One of the most prestigious projects that we have completed and about to inaugurate is the commissioning of 49 state-of-the-art dewatering stations in the city of Srinagar. अगर आपको याद हो 2014 के सैलाब के बाद dewatering was a huge issue. Waterlogging is a huge issue in Srinagar. मैं आपको वसूख से ये बताता हूँ कि श्रीनगर शहर की मैकेनिकल डिवॉटरिंग कैपेसिटी पूरे बड़े सगीर में आज नंबर 1 पे है, not just in the country. So there are a lot of other achievements too, मगर challenges भी अभी बहुत बाकी हैं. मैं चैलेंजेस के बारे में ही पूछना चाहूंगी जुनैद साहब, क्योंकि काफी देर से हमारे नाजरीन की गुजारिश रही है कि आपको स्क्रीन पे लाया जाए, आपसे सवाल पूछे जाएंगे. अभी उनके भी सवाल होंगे. पहले मैं अपने सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. यू हैड 2 टेन्योर्स, आपने 2 टेन्योर्स में बैक टू बैक काम किया है, और जैसे आपने कहा कि यहाँ का सिस्टम भी है तो सिस्टम बट नाम का, वहाँ पे काम करने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं. सो व्हाट हर्डल्स डिड यू हैव? Was it the support from the back end, or was it the understanding of people who were working with you, or the terrain of Jammu Kashmir? I mean, Srinagar probably. What exactly was the hurdle? All of them. Major. Every reason that you have listed has been a challenge for me. You know, मैं मजाक में ये भी काफी टाइम बोलता हूँ that I hold a public political office in apolitical times. I'm perhaps you know, on that level of responsibility, the only elected public official heading department right now, and that in itself is a challenge. These are slightly different times administratively, but I've also benefited from the support of a lot of good officers in the administration. I've benefited from the support and faith of you know, the administrative executive heads of the Union Territory and the erstwhile state. Especially, I should mention the faith and support, unqualified support of the Honorable Lieutenant Governor in transforming the city of Srinagar. Challenges topographical भी हैं, challenges planning जो पिछले 30-40 साल planning नहीं हुई शहर श्रीनगर की. Paddy lands में city एक्सटेंड हो गई. मास्टर प्लान 20-30 साल किसी ने जहमत नहीं की कि मास्टर प्लान को अपडेट कर सके. सैटेलाइट टाउन्स नहीं बनाए. ड्रेनेज हमारे शहर की 40 साल हैफजर्डली बनी. देयर वाज नो मेथड टू हाउ टू कंस्ट्रक्ट आवर ड्रेन्स. So over a period of the last 3 or 4 years, I have faced the challenges of improper planning, improper administration and maladministration that Srinagar has been a victim of. श्रीनगर शहर के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ ड्रेनेज अभी भी नहीं थी. श्रीनगर शहर के काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी भी पक्का सड़क नहीं है. श्रीनगर शहर के काफ़ी इलाका जात ऐसे हैं, स्पेशली इन नॉर्दर्न
and the western and eastern parts of the city, जहाँ पे drinking water supply is a huge challenge. हमारे जो रिवायती एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे, सियासतदान थे, उनने कभी प्रीएम्प्टिव प्लानिंग नहीं की. उनने कभी ये नहीं सोचा कि हम अगले 40 साल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं. They always reacted to challenges. They never preempted challenges. अभी अगर आप 2014 देखें, का प्रेसिडेंट्स दे रहे थे, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. अभी आप ये देखें कि काफी टाइम ये एक ग्रीवेंस रहती है. देखिए जी, हमारे इस इलाके में वाटर लॉगिंग बहुत है और ड्रेनेज नहीं है. शहर की बहुत कॉलोनीज मार्शेस और पैडी लैंड्स में बनी है, where there is no gravity flow to take water out. Dewatering stations are very expensive. मास्टर प्लान कभी रिव्यू ही नहीं हुआ. हमारे कॉलोनीज कौन बनाता था? हमारे शहर का मास्टर प्लान, एक अनऑफिशियल मास्टर प्लान लैंड ब्रोकर्स बनाते थे, इलीगल कॉलोनाइजर्स बनाते थे. आप किसी भी मॉडर्न शहर की बात करें, हम चंडीगढ़ की बात हमेशा करते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्लान सिटीज इन द कंट्री. एंड इन lieu of that being a planned city, because of that being a planned city, चंडीगढ़ के अर्बन चैलेंजेस बहुत कम हैं. लेकिन हम 40 साल तक प्लानिंग नहीं कर सके. किसी ने ये जहमत नहीं की, किसी ने इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी कि श्रीनगर शहर किस तरह बढ़े, किस तर्ज पे बढ़े, किस डिज़ाइन और प्लान के तहत बने, वो किसी ने कभी बनाया नहीं. क्या आप उस तवज्जो पे लोगों की गौर फिक्र करवा सके? बिकॉज अब आपके हाथ में है ये चेंजेस लाना, ये तब्दीलियां लाना, ये डेवलपमेंट लेकर आना. वर यू सक्सेसफुल? I wouldn't say that I failed. I would say that I've succeeded in some endeavors and I'm trying for the rest of it. In drainage, when I took over, I got the head of our drainage department, a very capable and senior officer, and told him that drainage तो एक, I'm a layman, but drainage एक nervous system की तरह होता है. उसका एक plan होना चाहिए. It should be holistic. There should be an analysis of existing drainage network, उसकी functionality क्या है, और फिर हम plan करने चाहिए कि अगले 25 साल तक drainage कैसी बननी चाहिए. और वो बड़े surprise और shock हुए. कहा that I never expected a politician will understand the technicalities of our challenges, and we started making Srinagar's first drainage master plan. पिछले 1 साल से हम वो मास्टर प्लान बना रहे हैं, और उसके फर्स्ट 3 जो हमारे उसमें कॉन्टेक्स्ट्स हैं, जो फर्स्ट 3 उसमें आप समझें ग्रुप्स हैं, वो मास्टर प्लान आज बन के आया है पिछले हफ्ते. सो व्हेन आई डिमिट माय ऑफिस एट द कंप्लीशन ऑफ माय टेन्योर, हम श्रीनगर को अगले 30 साल तक एक नक्शा दे पाएंगे कि 30 साल तक ड्रेन्स कैसे बनानी है, किस इलाके में बनानी है, किस डायमीटर की बनानी है, किस टेक्निकलिटी की बनानी है. इसी तरह वी हैव आल्सो अडॉप्टेड द यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज, जो पूरे मुल्क में अडॉप्टेड है. हमारे यहाँ अडॉप्टेड नहीं थी. श्रीनगर सिटी वाज विदाउट बिल्डिंग बायलॉज फॉर 30 इयर्स. हमारे बिल्डिंग बायलॉज ही नहीं थे. टुडे वी हैव बिल्डिंग बायलॉज. Illegal constructions was a huge issue. If we have those bylaws in place, why is there always a news, that's flashing around about illegal constructions being demolished? हर दूसरे तीसरे दिन होता है, क्योंकि परमिशन प्रोसेस बहुत टीडियस हो गया है. अगर बायलॉज हैं, लॉज हैं, shouldn't it be streamlined and easy? We've tried to make the permission process citizen friendly. We have an online building permission system now. You can apply online. We have an online birth and death certificate system. I am not very happy with how our building and planning section works, but I also understand their challenges. They are severely deficient in their staffing. What is the solution? उसके लिए भी तो कोई solution होना चाहिए ना. अगर staffing नहीं है तो I have time and again proposed solutions for revamping our planning section, and I hope that someday I'll be able to convince the administrative department that it needs an immediate rethink and revamp. But बेहतरी आई है. आप illegal constructions की बात करें, illegal constructions is a universal challenge. एक टाइम ऐसा था illegal constructions इतनी बढ़ गई थी, और अभी भी illegal constructions challenge है. मेरा इसमें ये सोचना है कि अगर कोई लॉ हो और वो लॉ बड़ा बेरहमी से और यूनिवर्सली और इनडिस्क्रिमिनेटली तोड़ा जा रहा हो लोगों से, ये सवाल पूछने की बहुत ज़रूरत है. इज दैट लॉ बैड? इज दैट लॉ प्रैक्टिकल?
हर एक शहर की तरह हमारी कमर्शियल नीड्स हैं, हर एक शहर की तरह हमारी ग्रोइंग रेजिडेंशियल नीड्स हैं इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो हमारी आबादी 50 साल पहले थी, आज वो आबादी है नहीं। मेरा बार बार ये कहना है और मेरी ख्वाहिश है कि वर्टिकल लिमिट ऑफ बिल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड इन श्रीनगर, ताकि हॉरिजॉन्टल कंजेशन शुरू हो। आप किसी भी शहर में जाएं, आप ये तस्वुर करें अगर दिल्ली में अपार्टमेंट्स ना होते और दिल्ली में 10-15 फ्लोर्स के अपार्टमेंट्स ना होते, तो मुझे आप बताइए दिल्ली का आज हाल क्या होता। अगर दिल्ली में वक्तन नोएडा और गुड़गांव के सैटेलाइट टाउन्स न बने होते तो दिल्ली का आज क्या हाल होता। सो these are my views, everybody knows about them। मैं कोशिश करता रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा कि प्लानिंग के लिहाज में we become a progressive city, we adopt best practices from around the world। श्रीनगर इज नॉट अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, हमें एमुलेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा बाकी शहर क्या कर रहे हैं, वो सैटेलाइट टाउन क्यों बना रहे हैं, वो मल्टीपल यूनिट हाउसिंग क्यों बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स क्यों बना रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको बता दूं, एवरीबडी कांट अफोर्ड टू लिव on 2 canals of land and construct a house। Obviously। we need apartments, we need flats। so उसमें हमारे मास्टर प्लान का एक बहुत बड़ा रोल है और मैंने ये गुजारिश की है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हम अपने मास्टर प्लान को रिवाइज न करें, हम नया एक मास्टर प्लान बनाएं, हम पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंडर फ्लोट करें और आलमी सतह की किसी ऐसी रिप्यूटेबल फर्म को ट्रांसपेरेंटली लाएं जिसने 30-40 शहरों का मास्टर प्लान बनाया हो, फिर हमारा भी बनाए। जैसा कि मैंने कहा, कोशिश जारी है and I hope that one fine day I'll succeed in trying to implement some of these ideas। जी, जुनैद, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या स्नैग है? वहाँ पे वो पेपर वर्क में, अखबारों में खबरें आती हैं, ये प्रोजेक्ट लाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे, बट शहर खास की अगर बात करें तो वहाँ पे तो उसका बहुत ज्यादा इशू है। उस पे आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी में अमलो दखल मेरा पॉलिसी लेवल पे नहीं है, वो मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। मैं स्मार्ट सिटी के एडवाइजरी बोर्ड में, एडवाइजरी फोरम में एक मेंबर हूँ। आई हैव नो से इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। स्मार्ट सिटी इज गवर्न्ड बाय अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। देयर इज अ CEO of the smart city and the divisional commissioner is the chairperson of the smart city। So I can't speak on behalf of the Srinagar Smart City Corporation Limited, but I have time and again made my suggestions available to them। In other parts of the country, there are a lot of cities where smart cities में executive और policy और planning role वहाँ के elected mayor का होता है, elected corporation का होता है। In Srinagar, the administrative structure of the smart city is as such, there is no role of the municipal corporation in Srinagar Smart City। I want to make that very clear। As long as solid waste management is concerned, we have succeeded to a certain extent, we are yet to succeed to meet a lot of challenges। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पिछले साल 1.5-2 साल पहले इसी आबादी के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक दिन 320 मेट्रिक टन गार्बेज कलेक्ट करके अपनी वेस्ट मैनेजमेंट साइट पे लेती थी, और उसी आबादी के लिए, उसी शहर के लिए आज हम 650 टन गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये 350 टन अनकलेक्टेड रह के शहर में स्प्रेड होता था। And that is why we become one of the cleanest cities। हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंजेस अभी सेग्रीगेशन पे हैं और हम अपने वेस्ट को ट्रीट अपनी लैंडफिल साइट में कैसे करते हैं उसमें वी आर in process of doing a bioremediation and biolegacy waste management project, and we are creating a new cell at Hudson landfill site, our 4th cell, one of the most modern landfill cells। One project has been tendered, it has been allotted। We're waiting for a technical sanction to start that। The other project will be inshallah tendered at a cost of nearly 125 crores this year। Okay, so when I talk about again the next sector, हमने जैसे आपके sector wise discussion करेंगे, रिंग रोड्स के बारे में हैव यू वर्कड ऑन दैट? सड़कों की बात की आपने कि काफी हद तक जो है ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें इंप्रूव करवाई हैं। एक शिकायत मेन जो मैंने सुनी है यहाँ पे नेशनल हाईवे पे है उमराबाद, वहाँ पे ड्रेनेज का जो है काम रुका है। लोग कहते हैं कि आधा आधा डिवाइड करके है, ईरा का काम चल रहा है, एसएमसी का काम नहीं चल रहा। क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वो मैं 2 बात बता दूं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, उमराबाद इज अ लो लाइंग एरिया। अगर हमारा ये बैरोमीटर होता
कि ड्रेनेज वहाँ feasible होगी, then Umrabad should not have been a habitation. It is a reality and you know it. Hokersar is a wetland, आज Hokersar में भी colony है. To drain a wetland and to provide gravitational drainage in a wetland or a marshy land is a challenge. But now these are realities, we have to make our peace with them and provide basic facilities. अभी तक मैंने आपको कहा ड्रेनेज किस तरीके से बनती थी. किसी दिन उठ के कोई एमएलए बता देता था, used his influence and clout and say please make a drainage in that mohala. उसका आउटफॉल हो या ना हो, nobody ever asked that. दूसरा एक ये होता था कि हम ड्रेनेज में टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स नहीं देखते थे. वी यूज्ड टू यूज लोकल इन्फ्लुएंसेस, आवर ओन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, और होलिस्टिकली कभी प्लान नहीं करते थे. एक मोहल्ले में एनबीसीसी ट्रेन बनाती थी, एक मोहल्ले में लेक्स एंड वाटरवेज बनाती थी, एक मोहल्ले में इराक का कोई प्रोजेक्ट होता था, एक मोहल्ले में एसएमसी का होता था. And the resolution of that is making a holistic drainage master plan, which has now been made. जी. हमारे शहर में शहर भी चल रहा है जुनैद, ये एक वीडियो क्लिप चल रहा है, शायद ये उसी एरिया का है, हमारे एडिटर साहब ने भेजा है. सो आप हालत देख सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू. देखिए, मैं वाकिफ हूँ इस इशू से भी. अभी शाल्टेंग का जो ड्रेनेज स्कीम है, वी हैव इनॉग्रेटेड दैट. इट्स वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस ड्रेनेज स्कीम व्हिच टेक्स केयर ऑफ द शाल्टेंग एरिया. वी आर वर्किंग ऑन द एचएमटी एरिया, द उमराबाद एरिया, द बेमिना एरिया नाउ. But these are all low-lying areas. These are waterlogged areas. भरा हुआ है, waterlogging. ये low-lying areas. ये low-lying areas हैं. यहाँ पे natural drainage नहीं है. यहाँ पे artificial mechanical drainage देनी पड़ती है. Mechanical drainage का मतलब है जब आप drain भी बनाते हैं, उसके head पे आपको dewatering station बनाना है. So drainage in those areas is 10 times as costlier in areas which are not marshy or low-lying. Hamdaniya Colony, Khomeini Chowk is one such example. We are facing enormous challenges in Advent Colony, in Naukam, because they are low-lying areas. To drain a low-lying area is a planning nightmare. But the drainage master plan will help in certain respects. We hope that the coming decades will see a resolution of those issues. जहाँ तक आपने उमराबाद की बात की, that is also a focus area in our drainage network. 532 linear kilometers हमारा drainage network है शहर में अभी. We need an additional 800 kilometers of drains in Srinagar. From 532, we need 800 more kilometers of drains. To resolve the drainage issues of Srinagar, we need roughly 8 to 10,000 crores. That will not happen in 1 year. We need a 20 or a 10-year master plan where we incrementally, as per critical priorities, resolve the drainage issues. But ये वैसी बात है. अगर ये पिछले 30-40 साल से बात करें जुनैद, हम isn't that tendered and approved, but काम रुका हुआ है, लोगों की शिकायत. One project is tendered and approved. Two more projects are in the planning stage. But there are some technical issues of connection of the drains, of outflow of the drains. It has been my endeavor to ensure that whatever is spent on the drainage, उसका outcome ये हो कि functionality हो, उसका outcome ये हो कि वो drains function करें. I will never under my watch allow public money to be spent in a way that it results in a failure. So I want to assure you that every project which has been tendered and allotted will be completed in a time-bound manner. But I will also ensure that the result is that it is successful. I will never allow the exchequer's money to be wasted. जुनैद साहब, अभी सवालात का सिलसिला और भी है. अगर आपकी इजाजत तो एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके दूसरी तरफ हम अपने सवाल जवाब जो हैं जारी रखेंगे. आपकी इजाजत है, मैं ले लूं वक्फा? जी बिल्कुल. जी शुक्रिया. नाजरीन हमारे साथ बने रहिएगा, आपके सवालों को भी हम यहाँ पे पढ़ के पूछेंगे. तब तक एक छोटा सा वक्फा और हम जल्दी वापस आएंगे. गटि मजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश. सेमटेक सिमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत.
आपका बहुत-बहुत नाज़रीन और शुक्रिया आपका जुनैद साहब हमारे साथ जुड़े रहने का और हमें वक़्त देने का। जुनैद साहब हम बात कर रहे हैं श्रीनगर सिटी की, श्रीनगर की बात कर रहे हैं। तो एक नाज़रीन का भी सवाल आया और ये आम तौर पे सुर्खियों में ये बात रहती है, डॉग्स की परेशानी बहुत ज़्यादा है और एसएमसी उनके पीछे भागती भी है, उनको न्यूट्रलाइज़ भी करती है, बहुत सारे और भी चीज़ें और तरीक़ेकार चलती है। सवाल भी मैं पढ़ लेती हूँ। काइंडली थ्रो लाइट ऑन डॉग मेनेस इन श्रीनगर सिटी। Please apprise us what has been done so far. Dr. Mohammed Shafi. I'm glad that question has been asked by. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Can you hear me? जी आपकी आवाज आ रही है। I am very glad that that question has been asked by a doctor because I would want that the challenges, the legal, judicial challenges that we face are also discussed. Srinagar city की stray dog population must be anywhere between 60 to 80,000. कभी कोई census वैसा हुआ नहीं. एक टाइम ऐसा था कि डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम आज से 12 साल पहले अप्रूव हुआ, कंसिडर किया गया, तब शायद 15,000 होती और ये 3-4 महीने में स्टरलाइजेशन कंप्लीट होती, 4-5 साल में पॉपुलेशन स्टरलाइज्ड होती, अनप्रोडक्टिव होती और करीबन 2013 या 14 में वी वुड हैव नो स्ट्रे डॉग चैलेंज। बट वहाँ पे उस वक्त हुक्मरानों की ये तरजीह थी कि ये जो डॉग स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम है उनके क्रोनीज करें और उससे ये पूरा स्टेलमेट बन गया। When we took over, this was one of the first challenges we discussed. And in a matter of 2 years, we succeeded in initiating the most ambitious and biggest dog sterilization program of the country, of sterilizing nearly 50,000 stray dogs. Usme ek technical, see, sterilization is the only thing you can do legally. There is nothing else you can do legally which will keep you out of jail. So sterilization is the only thing you can do. जी. Usme, when you tender out sterilization, there is a guideline that only firms empaneled by the Animal Welfare Board can apply for dog sterilization programs. Problem उसमें ये आई कि जो Animal Welfare Board of India के empaneled firms थे, उनकी उतनी financial और technical capacities नहीं थी कि वो इतना बड़ा project करें. So we had to re-tender that repeatedly and then reorient that and improvise that. Joint venture options उसमें रखी. We have now signed a memorandum of understanding with the Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology veterinary wing, veterinary department. We've signed an MOU with them. We're working with them to very soon, inshallah, initiate the biggest sterilization program of the country. हमारा aim उसमें क्या है कि हम 50, 60, 70% of reproductive dog sterilization को sterilize करें in a period of 7 or 8 months, ताकि आने वाले 3-4 साल बाद जो एक स्ट्रे डॉग की एवरेज लाइफ स्पैन होती है 4 साल की, उसके बाद 4 साल में ये स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन नेचुरली dwindle out हो. Now I understand this is a very long and tedious process. I understand that कहीं पे stray dog bites होती है और trust me, when I hear that a child has been bitten by a stray dog or a child loses his life, I don't sleep. I have 2 children, I have 2 daughters. I don't sleep that night. It's very hard for me. But sterilization is the only thing you're legally allowed to do. There's nothing else you're legally allowed to do. My personal assurance is that our sterilization program will be the biggest in the country, the most efficient in the country. Before I demit my office, the sterilization program should be completed, and then we have to wait over a period of 3-4 years for the existing stray dog population to naturally wean out. True. Again, the next project that I would talk about, street lights. स्मार्ट सिटी, रोशन शहर, लाइट्स लगाई गई, स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा लगाई गई, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद उसमें कुछ स्नैग आ जाता है, बल्ब नहीं चल रहा, तार नहीं चल रही, खराबी आ रही है। एक और विजुअल क्लिप हमारे यहाँ पे शायद चला रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? Why are they not checked in time? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, Srinagar Municipal Corporation entered into a tripartite contract with the Power Development Department and a public company called Energy Efficient Street Lighting, Government of India का subsidiary. और phase 1 में we installed nearly 60,000 street lights in the city of Srinagar. Never have so many street lights been installed.
And in second phase, we have proposed the installation of another 50 to 60,000 LED street lights. Sulfur-based, sodium-based street lights have been discontinued because they take a lot of power and they're very costly for the exchequer. हमारे concern street light में क्या है? Under our contract with EESL is supposed to, after installation of street lights, maintain them for 7 years. कहीं पे EESL की जो subcontracting रही उस firm की वो उतनी efficient नहीं रही जितनी रहनी चाहिए. एक time ऐसा है कि हालात के मद्देनजर जो उनके staff यहाँ थे, जो उनके expert यहाँ थे, they had to leave the city. Second issue is, all over the country एक dedicated street lighting phase होता है provided by the Power Development Department. आप किसी भी जदीद शहर की बात करें, वहाँ पे जाके आपको पोल के पास खड़े होके स्विच ऑन नहीं करना पड़ता स्ट्रीट लाइट का. Either it's on a timer or on a centralized system where street lights are turned on at dusk. Dusk to dawn, sorry. At dusk and turned off at dawn, or there is a timer or there is a light meter. As a part of our agreement, वो हुआ नहीं यहाँ. PDD could not provide a dedicated street lighting phase. So हर एक यहाँ बत्ती के साथ एक hanging switch लगाना पड़ता है जिसको on off करना पड़ता है. Because of our climate, because of vandalism, that is a problem. जब तक dedicated street lighting phase नहीं आएगा, dedicated grid stations पे उनके integration नहीं होगी, these challenges will exist. We are trying to convince the Power Development Department to give us a dedicated street light. But street lighting, it is safe to say, Srinagar city में कभी इतनी street lights नहीं थी. I understand the challenges that we face, that it is not a perfect system. We are trying to make it better. लाइट्स की बात कर रहे हैं तो अगली लाइटें ट्रैफिक लाइटें जब कश्मीर में यहाँ पे श्रीनगर में इंस्टॉल हुई थी, लोग बहुत अलग अलग तरह की रिएक्शंस आ गई. वी वर नॉट यूज्ड टू हैविंग दोस ट्रैफिक लाइट्स. हर एक चौक पे आपको वो रेड लाइट क्रॉस करने के लिए वेट करना पड़ता है. बट कुछ देर के बाद वो सब बंद भी हो गई. चौक बंद हो गए, डाइवर्जन आगे कर दी. 100 से 200 मीटर के आगे जाके आपका डाइवर्जन स्टार्ट होता है. Isn't this just a waste of money and public interest? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? No, it's not a waste of public money. It is a necessity in today's time to regulate traffic in any modern city. Street lights are aimed at better traffic management. That is the purpose of street lights. But street lights, in the absence of infrastructural augmentation of roads, widening of roads, increasing of road infrastructure, proper designing of road infrastructure and diversions, cannot do the task alone. Traffic decongestion, traffic regulation सिर्फ एक law and order और management mechanism नहीं है. इसका एक अहम important aspect infrastructural है. बहुत सारी जगह अगर आप शहर में देखेंगे जहाँ पे congestion के issues हैं, वो basically इसलिए क्योंकि अब ये लेकिन स्ट्रीट लाइट के पास से टर्न होना चाहिए था, क्योंकि ट्रैफिक लाइट लगा है तो यहीं पे स्टॉप लुक को होना चाहिए. बट यहाँ पे आपने डाइवर्जन लगा दिया एंड यू हैव टू टेक अ टर्न समवेयर एल्स. इसका क्या रीजन हो सकता है? हमने डाइवर्जन नहीं लगाया. द ट्रैफिक पुलिस मस्ट हैव डन इट. सी, in a place like Srinagar, there are different factors at play. The police will close some roads, the traffic police will close some roads, but that is the point I was getting at. Street lights will work effectively when they are one part of a holistic system of a road network, which is designed properly, designed by traffic engineers, not just by civil engineers, जिसमें traffic engineering हो, supervision हो. एक अहम इसमें SMC ने nearly at a cost of 56 crores एक प्रोजेक्ट किया है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम ITLS, which is now connected to the ICCC, the Integrated Command and Control Center at HMT. So जैसा आपने मूवीज में देखा होगा अक्सर कि all traffic lights in the city are monitored through a control room. And it's a holistic system that when one light turns green, then the other light 2 kilometers down turns green. So it's a holistic system. That has now happened. There is an ILTS. Otherwise, all our traffic lights were on a timer. It was pretty much a manual system. So we are going towards the most modern form of traffic light management system, ILTS. जो डिमिट्स एक फर्म है उसने किया है. But
in the absence of upgradation of road network, जिस शहर में 30,000 गाड़ियां थी, 20,000 गाड़ियां थी, अगर उस शहर में आज 2 या 3 या 4 लाख गाड़ियां हैं, एंड यू हैव द सेम रोड्स, जहाँ पे आप शहर में देखें जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक इश्यूज हैं, दे आर बिकॉज द रोड विड्थ इज द सेम जो आज से 50 साल पहले थी, लेकिन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दैट रोड हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड. So in the absence of creating new roads, new flyovers, new road infrastructure, जैसे रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट अभी हो रहा है, that is a road which will go around the city of Srinagar, that will decongest the city's arterial and main roads to a great degree. Infrastructural augmentation की बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर वो वही बात आई, how do you plan a city? Do you plan a city with 6-month outlooks, with reactive outlooks, or do you plan a city preempting the population growth that you will witness in the next 50 years? जब हम वो करना शुरू करेंगे, these urban challenges we will be able to deal with in a far better way. जी, ब्यूटिफिकेशन भी आपका एक हिस्सा इदारा है जिसमें आपका काम आता है. जब हम श्रीनगर की बात करते हैं, शहर ख़ास की बात ना हो, ये हो नहीं सकता. तो उसकी ब्यूटिफिकेशन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, उसके हवाले से एसएमसी का क्या रोल रहता है डेवलपमेंट में? Lot of projects जो हम कर रहे हैं, मॉडल म्युनिसिपल मार्केट्स बना रहे हैं, हेरिटेज मार्केट्स बना रहे हैं. We are working on fountains in the city of Srinagar, high mast lights. We are trying to beautify basic amenities जो community civic amenities लोगों को provide की जा रही हैं. Sanitation को बहुत upgrade किया गया है जदीद तर्ज में, ख़ुसूसन शहर ख़ास में. हम एक और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्म साइनेजेस ऑफ शॉप्स शहर ख़ास में दें. जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर में है, चंडीगढ़ में देयर इज अ यूनिफाइड साइनेज, जो वो विजुअल फ्लटर है वो शायद कम हो. Amenities increase हुई हैं. We are trying to construct nearly 40 new community and public toilets. Eventually our aim is to construct 200 more public toilets because we are a tourist city. And surprisingly, वो बहुत बार न्यूज़ आती है ना that you see a picture of tourists easing themselves and urinating on the side of the road, और एकदम अलार्म आता है कि देखिए जी ये क्या हो रहा है. लेकिन हम ये सवाल नहीं पूछते हैं कि इस टूरिस्ट सिटी को 30 साल तक किसी हुकूमत ने पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं दिए. ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. Every city needs a public toilet every 1 kilometer down the line, every 2 kilometers down the line. नहीं बने कभी. So these legacy challenges have accumulated. We're all trying to resolve most of them within a specific period of time. We will, inshallah, resolve most of them. But we all need to appreciate the fact that all of us know in the hearts of our hearts that all these urban challenges have accumulated. ये जमा हो गए हैं पिछले 40 साल तक. ये misgovernance, improper planning की वजह से जमा हुए. और मेरी पूरी नीयत, पूरी कुव्वत और पूरी ताकत और मेरा टाइम वक्त इस चीज़ में है कि हम अक्सर बेशतर इन अर्बन चैलेंजेस को मीट कर सकें. जी, अभी एक बड़ा चैलेंज जो आने वाला है जुनैद साहब, ईद कुर्बान आने वाली है. उसमें लोग इतनी खुशी से जितना सेलिब्रेट करते हैं, उसी हिसाब से एनिमल हाइड, स्किन वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है और आपकी ही डिपार्टमेंट के साथ है. एसएमसी के ही सर पे उसका सारा ज़िम्मा रहेगा. तो उसके लिए क्या प्लान किया है? सैनिटेशन, प्रिपरेशन, इफ आई टॉक अबाउट दैट. We do it every year. It is a monumental challenge. Eid पे हमारे जो field staffs होते हैं, they're out. They don't spend Eid with their families. This is what they do. हमने बार-बार ये guidelines issue की होती हैं that please don't dispose of animal hides and animal biological refuse in our dumpsters, but people do it. और अक्सर आप सरप्राइज होंगे, एनिमल हाइड्स को ड्रेन्स में डाला जाता है, फिर ड्रेन्स क्लॉग होती हैं और फिर ये कंप्लेंट होती है कि ड्रेन्स हैव क्लॉग्ड, ड्रेन्स आर डिसफंक्शनल, एसएमसी इज नॉट डूइंग एनीथिंग. If we put it under exhibition, what sort of things we extricate and excavate from our drains, every common citizen will be shocked. We take out mattresses, bedding, all sorts of concrete waste, all sorts of biological waste from our drains,
and that is a challenge that we have. ईद पे मेरी गुजारिश सब लोगों से ये रहेगी, my fellow citizens of Srinagar, that SMC हर साल गाइडलाइंस इशू करती है कि डिस्पोजल ऑफ हाइड्स एंड बायोलॉजिकल वेस्ट कैसे हो. प्लीज उन गाइडलाइंस को माने. हम स्पेशल हूपर सर्विसेज श्रीनगर शहर में ऑफर करते हैं ईद पे. प्लीज वो एनिमल हाइड्स और ये तो देखिए, ये एक हमारा दीनी भी ये दीनी लवाजमात भी इस चीज़ के हैं. जो कुर्बानी का तकद्दुस है वो बहुत है, और कुर्बानी के जो लवाजमात हैं उनको पूरा करें. टू थ्रो अ हाइड इन डंपस्टर्स, टू थ्रो refuse and limbs and the heads of sacrificial animals in dumpsters, गुनाह भी बहुत बड़ा है. लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, दीनी गाइडलाइंस को भी फॉलो करें, और जो एसएमसी की गाइडलाइंस हैं उनको भी बराए मेहरबानी फॉलो करें. जी, एक सवाल है आपके लिए आहिल अर्श साहब का. Sir, we the residents of Gulbahar Colony, Rathpura, Eidgah are facing lots of problems like drinking water, electricity service line and drainage. SE drainage are estimated the drainage at cost rupees 27 lakh, but unfortunately work stopped by the concerned department. Kindly look into the matter and respond at the earliest. It's a request that they've made. We are doing a lot of projects in Rathpura Eidgah. Eidgah has been one of the most neglected areas traditionally in the past 3 decades. हमने बहुत इंटरवेंशंस वहाँ किए हैं ड्रेनेज से. मुझे लगता है एरा की तो वहाँ तक अभी इन्वेस्टमेंट इन दैट एरिया लगभग 20 करोड़ क्रॉस हो गई होगी पिछले 2-3 साल में. Lanes and drains have also been invested in. Electric infrastructure is being upgraded. जो ये specific case है, I am not aware of it. I will try to understand Gulbahar Colony में क्या issue है. My SE drainage has informed me that work of drainage at 3 locations in that vicinity has been stopped because of technical challenges. कहीं पे there is resistance from the locals in the construction of those drains, और कहीं पे 2 जगह in that area एक चाय ढाबा वहाँ पे कोई एरिया है, it's from the top of my head, I was briefed yesterday, जहाँ पे a technical problem has arisen, but I assure you I'll look into it and I'll try to resolve the issue. जी, शायद हमारे नाज़रीन के सवाल, बाकी कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बट सवालात शायद इतने ही हैं. मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि वक्त की भी कमी है. जुनैद साहब, आप ये बताइए, गार्डन्स, रिवर बैंक्स या पार्क्स के हवाले से एसएमसी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस वक्त, क्योंकि दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसएमसी. So, as a part of desegregation of various departments and their accumulation in SMC, nearly 150 parks in the city of Srinagar have been transferred from floriculture to SMC. But again, I am not complaining, but it is a fact that the parks have been transferred to us, the funds have not been transferred to us, the functionaries have not been transferred to us, only the functions have been transferred to us. We are trying to do the best we can. All of a sudden, we find ourselves from being one government department to being the government of Srinagar. We are trying to make the best of this opportunity, and it is a monumental challenge. Parks ke liye, in this action plan of this year, the capital expenditure plan that we call the CapEx, we've kept nearly 52 parks that we are going to upgrade. I am of the view we need to outsource the management of our parks over a period of 7 years. उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का एक प्राइवेटाइज्ड probably revenue generating कोई हमें mechanism बनाना पड़ेगा. We are trying to do that. River banks are not maintained by us. River banks are maintained by the Irrigation and Flood Control Department, including the beautification of river banks. We try to step in where we can. Srinagar Smart City is doing a very ambitious riverfront development project on the Jhelum River, the Band side. On the Shalimar Bagh to foreshore link of that canal, a 52 crore project is being done of beautification. We will pitch in, even if it is the responsibility of Irrigation and Flood Control or Lakes and Conservation Management Authority. Srinagar Municipal Corporation का effort or initiative ये रहेगा that we will try to go above and beyond and pitch in to help other departments. जी, दिलावर यासीन साहब का एक और सवाल है आपके लिए. Our main holes, Hyderpura to Wasbagh, Srinagar, have not been cleaned since their construction. Please come to our rescue, Hyderpura, Wasbagh Link Road. It's again a request. I have taken note of it, Hyderpura to Wasbagh. I will
get details of this issue and I'll pass necessary instructions. Okay. और डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब का एक और सवाल आया and he's asked, may I ask another question regarding areas under paid municipal services? The municipal staff associated with it are always complaining about the less number of hoopers, non-availability of drivers, etc. It's a very valid question. We have nearly 120 hoopers, 20 odd are dysfunctional. ठीक नहीं है क्योंकि mechanical workshop हमें कभी फराहम वैसा हुआ नहीं जैसा होना चाहिए. So we have nearly 100 hoopers, functional hoopers, which go door to door for door to door collection of waste. We have procured 120 more hoopers. Now we are waiting for a tender. The government has not allowed us to hire and employ hoopers on drivers on our own. We've outsourced the hiring and the operation of those hoopers. उनके drivers हमने outsourcing service contract किया है. We are waiting for the drivers to come. And inshallah, very soon, instead of 100 hoopers in the city, we're going to have 220 hoopers in the city. Uske baad, we will need more than that, but at least we're going to double it, inshallah, this summer. इंशाल्लाह. जुनैद, आखिरी जाने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि अब हमारा वक्त भी ख़त्म हो रहा है. आपने बात की अजीम जी का जो आपने प्लान कहा कि दैट यू वांटेड टू हैव दैट थिंग हैपन हियर और 2 बैक टू बैक इनिंग्स रही हैं आपकी एज मेयर ऑफ द सिटी. व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन नाउ? Where do you want to see it? Here, or higher? See Srinagar or me? Srinagar and you both. You go hand in hand right now because you are the mayor. Well, I've had 2 innings and I've had a very tumultuous and very interesting and volatile tenure too. I've not had the stability that I would have aspired for to work. And there was a period of time between my 2 tenures where I was out of office too. But with all humility at my command, I've tried to do justice to the responsibilities placed on me. I dream of a modern Srinagar. I dream that Srinagar should be one of the most modern cities in the country. We should be a progressive, liberal, and blossoming tourist city, which manages its sewerage, which protects its water bodies, which curtails its level of pollution, and which ensures that we grow according to a very systematic plan. Let's hope that we all work together to see that Srinagar. Where I see myself, and I get asked that question a lot. Where do I see myself in 10 years? Where do I see myself in 15 years? I believe, I like to think I'm a very serious politician, but I'm not a very conventional politician. I'm working in all earnest to connect with the youth of Srinagar. I want the youth of Srinagar to invest their faith in democratic processes in politics. जितना हमारा नौजवान दूर रहेगा मेन स्ट्रीम से, इन सिस्टम से, उतना बदलाव इम्पॉसिबल होता जाएगा. मेरी उम्मीद है कि एक टाइम आए that I will be able to put my ideas into action, to transform them into action with a greater responsibility. I hope that I am given an opportunity by the people to serve them longer, to serve them in different capacities. Let's see. I am a firm believer in destiny. नीयत साफ होनी चाहिए, बाकी तकदीर तो लिखी हुई है सबकी. हस्बे मामूल हस्बे रिवायत जो मैं आखिरी सवाल पूछती हूँ उसके अलावा मैं कभी दोबारा सवाल नहीं पूछती. I keep my promises and word. But आपने जैसे यूथ के हवाले से बात की, नौजवान पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि वो एक्टिव होने चाहिए अपने हक, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी पार्टिसिपेशन के लिए. सो क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट के लिए आप? Well, I like to think that Srinagar mein my outreach and community involvement is good. It's strong. I think I meet more people. I reach out to more people than any of my contemporaries or any of my colleagues. I try to do that. A lot of youth in the city of Srinagar work with me. They're directly connected to me. I try to tell them कि ना उम्मीदी कुफर है. जितना भी गलत हुआ है, ना उम्मीद होना मुतबद्दिल नहीं है. It's not an alternative. It's not an option. We have to look for hope.
we have to get together, or we will only be able to transform our localities, our communities, and Srinagar, our city as a whole, और जम्मू एंड कश्मीर as a whole, जब सही लोग सियासत की तरफ राग़िब होंगे, अगर सही लोग सियासत से या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रहें, तो we are as much a part of the problem as anyone else. True. Very well said and thank you so much जुनैद साहब हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और हमारे नाज़रीन के सवाल हमने आप तक पहुँचाए और कुछ और अगर छूट गए हैं we'll have them sent to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन ये थे हमारे साथ जुड़े हुए जुनैद अज़ीम मटू साहब जो कि मेयर हैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और बहुत खूबसूरती से कहा कि नाउमीद होना कुफ्र है। इंसान को कभी भी ज़िंदगी में नाउमीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं ये हमेशा कहती हूँ और बातें रहती हैं। हम कोशिशें ये करते हैं कि हम आपके सवाल अपने गेस्ट तक पहुँचाएँ और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो सोच है, उनको आप तक ज़ाहिर कर सकें। हम सिर्फ़ एक मीडियम हैं। गेस्ट के सवाल हों या जवाब हो या आपके सवाल जवाब हों, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं रहता। उनका अपना सोच है, आपका अपना सोच है। हमारी कोशिशें कैसी लगती हैं आपको वो ज़रूर बताइएगा। हमारा आरएनए का फ़ेसबुक पेज है, यूट्यूब, ट्विटर, हमारा वेबसाइट है rnakashmironline.com और ट्विटर हैंडल ऑफ अ सिस्टर कंसर्न द कश्मीर क्लैरियन। इस पे जाके आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताते रहिए कि हमारी कोशिशें आपको कैसी लगती हैं। आज के लिए इतना ही। इल्तिमास दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।